Assalamu alaikum everyone and welcome to this final episode of our special series focused on CPEC and BRI. And sir, jumping right into it, I would like to just start off referring to the previous episodes जहाँ हमने बताया था कि इसकी जो need थी BRI की and as an extension of its corridors वो दो main reasons की वजह से थी. सबसे पहले global financial crisis of 2008 and दूसरा जो pivot to Asia 2011. That's the announcement by Hillary Clinton, Secretary of State. Yes. तो सर इसमें excess capacity पे हम अभी बात कर रहे थे. तो how does this relate to the ideation of देखें ये after Trump's tariff policy ये excess capacity का issue अब फिर एकदम it's come to the forefront. And there is a lot of concern in the European countries and also in the US that US अगर control कर लेगा of dumping of Chinese goods. So that problem is still there, excess capacity का. और इसमें उन्होंने तो जो इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फिगर्स हैं अभी वो रिलेट करते हैं कि स्लो डाउन है ग्लोबल ट्रेड के अंदर तो विच मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर चाइना टू मैनेज इट्स एक्सेस कैपेसिटी क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी. जी हाँ बिल्कुल वो देखें WTO is projecting that world trade is going to drop by 2.7%. Now with the global trade shrinking and with all these restrictions by the US and the European Union, China will now try to extend its trade into Africa and into Latin America. Right. Abhi recently, day before yesterday, they have reached an agreement with Colombia in South America. Colombia borders the Panama, जहाँ पर Panama Canal है. Right. तो ये भी एक I think it is a very important development. Now China is saying that we will now come to, why announce Colombia at this stage? And also they have in this deal to make it attractive, they are going to be giving J-10E jets to the fighter jets that were much in the news. They are going to be giving it to Colombia. So now they're going to be exploring other options. ये ठीक है वो this cannot make up for the lost demand in the US, but they are not going to give up. So this problem was there 10 years back, it is again here today, they will deal with it. Right. और सर पैनामा का पहले भी बता रहे थे कि पहले पैनामा के साथ उनकी कोई डील थी एंड अंडर ट्रम्प प्रेशर उन्होंने इसको ख़त्म किया, हेंस दे आर फोकसिंग ऑन कोलंबिया. हाँ उनकी वो ये था कि जो पैनामा कनाल है दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ वन ऑफ ली Shocking company, Lee Ka-shing companies. ये हांगकांग मैग्नेट है. So he had management of his company had management of the Panama Canal. So वो they could foresee that Trump pressure is going to build up. So BlackRock, the big American giant, they have taken over from the Chinese. So this is a private deal, but that the Chinese have withdrawn from the Panama Canal, but they are there in ताकि अपनी presence ensure करते हैं. जी हाँ. अच्छा सर एक और जो point जो overarching है वो that is the मलाक्का dilemma जिसको सरपास करने के लिए चाइना सब कुछ कर रहा है और ये एशिया पिवट टू एशिया से भी रिलेट करता है. देखो वो जो ओरिजिनल है ना, this has been in the Chinese policy for a long time. The original concern was expressed by President Hu Jintao in 2004. फिर जब ये pivot to Asia announce हुआ, which is actually how the Chinese see it, pivot to China. तो उसके बाद उन्होंने फिर इसको they brought it in the limelight कि हमें we have to make policies to take care of this. और सर इसमें जो रेल्स हैं इसमें लिखा हुआ है ना कि पार्शियल सोल्यूशन है इसका, तो ये किस लिहाज से हैं, मतलब तो रेल्स इज वन ऑफ द वे जिसके थ्रू ये करना चाह रहे हैं इसको रिजॉल्व. जी हाँ, what they have done over the last few years, they have, if you look at a map of Eurasia, it is now today these rails were crisscrossing from China to Europe. वो जो लोग कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जी पार्शियल सोल्यूशन इसलिए है कि it still does not in terms of it being feasible, still does not compete with the shipping container on a ship. But
it is for some goods it has become already it is feasible, and as time goes by, as this technology improves and rail speeds improve and so on and so forth, ये इसकी जो रेलेवेंस है वो बढ़ेगी. सर इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जिस तरह इस्तांबुल और शियान फ्रेट जो है सिंस 2020. Since 2020, it's a scheduled service freight train that runs from Istanbul to Xi'an. एक और जो ट्रेन कनेक्शन है वो शॉन्किंग टू अफगानिस्तान है. दिस इज ऑल्सो स्टार्टेड. अभी ये कोई रेगुलर ट्रेन सर्विस नहीं है, बट दिस विल गो फर्स्ट टू हॉर्गोस, जिसकी हम पहले बात करते रहे, काज़ाकिस्तान में. ये जो बेल्ट है इसमें चाइनीज़ रिफ़र टू काज़ाकिस्तान एज द बकल इन द बेल्ट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इसलिए वो खरगोश इज़ इम्पॉर्टेंट. सो ये खरगोश से आएगा एंड देन इट विल कम डाउन टू उज़्बेकिस्तान, एंड देन उज़्बेकिस्तान शेयर्स अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान, सो ये अफगानिस्तान में आ जाएगा. और एक जो वेरी रिसेंट डेवलपमेंट है वो है चाइना ईरान ट्रेन रूट. ये पिछले साल शुरू हुआ है 2024 में. देयर इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड 5 नेशंस रेलवे कॉरिडोर. इसमें उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब ममालिक शामिल हैं. सो इसको लेवरेज किया जाएगा फॉर प्रोवाइडिंग रेलवे कनेक्शंस टू अफगानिस्तान, टू ईरान एंड टू अदर कंट्रीज इन द रीजन ऑल्सो. एंड दिस विल ऑल्सो बी के जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर पोर्ट्स हैं, उसके अलावा चाबहार पोर्ट जिसमें आपने, दैट वुड also be connected with this. I'm glad you brought this up. So ईरान में 2 ports. बंदर अब्बास बहुत उनका पुराना पोर्ट है. Most of their traffic takes place goes through बंदर अब्बास. चाबहार fishing village, which is now thanks to Iranian vision, वो अब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन गया है, पोर्ट बन रहा है. तो ये इसकी जो geographical location है, it is outside the Straits of Hormuz. So if at any time Straits of Hormuz is blocked, Chabahar will still have access to the rest of the world. So ये जो ट्रेन सर्विस है ये चाबहार को भी कनेक्ट करेगी, और चाबहार जो है it will ultimately be connected to अफगानिस्तान also. तो इसमें हमें 2 चीज़ों का सोचना है. एक तो चाबहार is likely to affect the business that we were hoping to get for Gwadar, number 1. एंड सेकेंडली हमारी जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है विच पासिस थ्रू पाकिस्तान, वो भी इफेक्ट होगी, वो भी अब इधर जाना शुरू हो जाएगी. और सर इसमें जो हम डिस्कस कर रहे थे कि कंट्रीज इवन एज फार एज साउथ कोरिया एंड मर्स्क, वो जो डच जाइंट है शिपिंग, वो भी सोच रहे हैं कि इस कॉरिडोर को हम यूज़ करें. जो है ना साउथ कोरिया not so much as this corridor, the 5 nations railway corridor, but South Korea is looking at the Eurasian train network, कि वो कुछ चीज़ें वो यूज़ करेंगे for the export of certain items. They will be using the railway network. The Maersk, which is a shipping giant, वो भी they are looking at options of certain containers will not be going through the container carriers, but they'll be traveling on ships, train. On train. Speaking about Maersk, sir, और ये हम climate की भी बात करते हैं, everything is connected. So ये the emergence of the northern sea route. Yeah. तो इसका भी इसके साथ connection in for the future. इसका connection देखिए, हमने तो देखना है हर चीज़ का connection, और we'll try to see the impact of various developments on CPEC and on Pakistan. जी. अब ये नॉर्दर्न सी रूट इस तरह वो रेलेवेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप. अभी तो ईयर राउंड वो यानी शिपिंग इज़ नॉट पॉसिबल, बट एज टाइम गोज़ बाय इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे कटर्स ऑल्सो, आइस कटर्स, जो शिप्स होती हैं which clear the way. And Russia has more ice cutters than any country in the world. America is only one. They are working on it. Okay. और इसकी एक ह्यूज कॉस्ट, इसकी कॉस्ट जो मैंने पढ़ी है कम से कम $500 million है, एंड इट कैन गो अप टू एज हाई एज $1.8 billion. ओके. सो ये जब कटर्स को इस्तेमाल किया जाएगा तो देन यू विल हैव मोर रेगुलरिटी इन द नॉर्दर्न सी रूट. नॉर्दर्न सी रूट will go
will be serviced by the Russian ports of Murmansk and Archangel. So ये भी एक रूट है जो डेवलप हो रहा है, और in combination with the rail route, this is resolves China's Malacca dilemma to quite an extent and creates problems for our गवादर पोर्ट. क्योंकि अगर मलाका डिलेमा और तरीक़ों से रिजॉल्व हो रहा है तो उसके साथ रेलेवेंस गवादर की क्वेश्चनेबल हो जाती है. क्वेश्चनेबल है. अच्छा, इसमें जो स्वेज कनाल में जो हो रहा है ना फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, Houthis have created a lot of problems in the Red Sea. तो उसकी वजह से insurance rates have gone up in the Suez Canal, and there's a lot of uncertainty. So वो भी उसको भी bypass करने के लिए, यानी not only the Malacca dilemma, the Malacca Straits, but also to bypass the Suez Canal, which itself is a choke point. ये जो railway network है in Eurasia and the northern sea route for container ships will become more and more relevant. Right, sir. Last में हमने एक बार इसकी भी बात की थी कि how ASEAN countries is the largest trading partner with China. It's $975 billion. She went to the tour अभी recently जब tariffs लगे. One of them ये म्यांमार जो है, इसका भी पोर्ट था, मैं pronunciation Kyokpu, which the Burmese call Shokpu. Shokpu is in Rakhine province, which is the western province of Myanmar. Right. अच्छा, इधर वो आपको याद होगा रोहिंग्या क्राइसिस हुआ था, वो अभी भी ऑन गोइंग क्राइसिस है, बट नॉट सो मच इन द न्यूज़. तो इधर चाइना ने एक्सप्लोरेशन की है, चाइनीज़ कंपनी ने, एंड दे आर ड्रिलिंग ऑयल एंड गैस एंड पाइपलाइंस हैव बीन laid down. 2000 I think 13 is the gas pipeline, and 2017 में क्रूड ऑयल की पाइपलाइन. और सर ये CMEC जो हम अभी डिस्कस CMEC के अंडर आता है, ये हमने आपको याद हो कि one of the corridors that we looked at had Indo-China and Myanmar and Bangladesh. वो जो corridor है, that is not making headway because of the China-India conflict. तो वो corridor inactive है. अच्छा, ये corridor इस तरह नहीं है कि अगर वो inactive होगी तो सब कुछ inactive हो गया. उसमें कोई ना कोई वो चीज़ चलती रहती है. तो उसके बाद 2017 में चाइना ने और म्यांमार ने CMEC अनाउंस किया. उधर CPEC है, इधर CMEC है. अब CMEC अकॉर्डिंग टू मैनी एक्सपर्ट्स, वेस्टर्न एक्सपर्ट्स एंड सो ऑन, के जी वो इट्स नॉट रियली मूविंग, इट्स इन इंटेंसिव केयर और ये और वो. बट कीप इन माइंड दैट ये जो हैं दो पाइपलाइंस, उधर से ऑयल ड्रिल किया जा रहा है राखीन प्रोविंस से, and it has been taken north all the way to Kunming. And once you come out of Rakhine province, which has its own problems, and you approach north Burma, so udhar bhi there's a lot of insurgency. Only 21% of the territory of Myanmar is fully under the control of the junta, the military junta. So baki, the rest of the country is not very stable. और इसी रीजन में बट चाइनीज पॉपुलेशन भी 40% आप बता रहे थे है. यंग ये जो है मैंडले जो है, मैंडले 40% ऑफ पॉपुलेशन इज चाइनीज, एंड दिस इज नॉट टुडे, दिस इज ओवर द लास्ट फ्यू हंड्रेड ईयर्स, बिकॉज एट वन टाइम बर्मीज एम्पायर एक्सटेंडेड इनटू चाइना, द प्रेजेंट डे यूनान प्रोविंस. सो उधर भी बर्मीज भी हैं, उधर से जो चाइनीज हैं वो present day म्यांमार में भी हैं. And that probably helped in sort of making this pipeline and its stability possible. वो चाइना ने अपना जो रशिया चाइनीज जो डियास्पोरा है देयर, उसको भी यूटिलाइज किया है. जो ये अराकान आर्मी है, इंसर्जेंसी ग्रुप्स, उनको दे यूज द स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी to make sure that these pipelines are not disrupted. Till this point, they have not been disrupted. There are certain parts of this pipeline which are there only about a meter below the Earth's surface. Right. लेकिन वो भी अभी तक कोई ऐसा untoward incident नहीं हुआ. So Chinese can, जो हम पहले बात कर रहे थे, Chinese can probably resolve this issue with the insurgency groups, and they can take it forward and they can make some improvement.
बट परहैप्स दे डोंट वांट टू बिकॉज ये जो बॉर्डर है ये अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है. So इंडिया के हाँ, सो वो दीज नागालैंड, मिज़ोरम, सो ये जो सब इंडिया की जो स्टेट्स हैं वो भी ये they share a border with these tribes there. They share a border with Myanmar. So it is not really in China's interest to totally stabilize this region, but they will stabilize it enough to keep these two pipelines running. And if that happens down the lane, if this fully is consolidated, तो 6% तक China की total energy needs will come from this country. 6% including whatever China imports from other countries. Right. They are brought to this port. And then it goes so ultimately their projection is that 6% of our energy needs, that is all the energy that is produced within Myanmar and also imported from other places, and then use this port to transfer it to Yunnan province. Yeah. Sir, and now coming to the current affairs अभी right now, there are also other challenges. हम challenges की बात करनी है, future and challenges. तो one of the challenges ये geopolitical Russia Ukraine war है, इसके साथ साथ China की economy है. And do you think this is that much of a threat कि it poses some risk to BRI, not CPEC but BRI? BRI को देखो, उन्होंने काफ़ी जो जब रशिया पे sanctions लगी हैं तो उन्होंने ये जो ट्रेड रूट चेंज भी किया है. उन्होंने अवॉइड किया रशियन टेरिटरी चाइना ने, एंड दे स्टार्टेड रनिंग थ्रू दिस व्हाट इज़ कॉल्ड द मिडल कॉरिडोर. तो ये जो आज़रबाईजान एंड कैस्पियन एंड द कंट्रीज कॉकेसस कंट्रीज इसको यूज़ किया है टू रन द रेल लाइन्स. सो दे आर ट्राइंग टू कम अराउंड दिस प्रॉब्लम. द बिगर प्रॉब्लम इज़ द चाइनीज़ इकॉनमी. चाइनीज़ इकॉनमी में जो है ह्यूज प्रॉब्लम है, दैट इज़ ऑफ द रियल एस्टेट डेट दैट इज़ रियली गॉन अप. और आपको याद होगा कि वो एक जो चाइनीज़ कंपनी थी एवरग्लैंड, उसके $300 बिलियन के बैड डेट से व्हेन इट वेंट इनटू बैंक्रप्सी. सो डेट का चाइना का बहुत बड़ा इशू है. और एक और जो उनका इशू है वो है कि ये जो इन्होंने लोन्स दिए हैं टू BRI कंट्रीज़, वो भी दे हैव ऑल्सो रीच्ड एन अनसस्टेनेबल लेवल. ठीक है. वो एक जो फिगर है वो ये है कि 22 countries have been bailed out by China already, and $240 billion the Chinese government had to use this amount to bail these countries out. And over and above this is the $300 billion जो चाइना का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक है उसके जो बैड डेट्स हैं. सो गिवन ऑल दिस आई थिंक वो जो था ना, जो फोकस ऑन कॉन्क्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें जितनी एलोकेशन होनी थी अब तक $1.9 ट्रिलियन की एलोकेशन हो गई है, स्पेंडिंग हो गई है चाइना इन BRI. जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉन्क्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट होनी थी वो इट इज़ प्रिटी मच डन, एंड नाउ इट विल बी इन द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज. ठीक है. एंड सर इसके अंदर जो ब्रिक्स है, विच इज़ अ फॉर्मिडेबल फोर्स, 40% ऑफ पॉपुलेशन, 40% ऑफ द GDP ऑफ द वर्ल्ड, बल्कि अब ब्रिक्स प्लस की भी बात जी हाँ हो गई है, बल्कि मेंबर्स बन गए हैं. इथियोपिया मेंबर बन गया जी हाँ. एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन यूरोपियन कंट्रीज भी इंटरेस्टेड हैं टू बिकम पार्ट ऑफ द ब्रिक्स. अब वो प्रेशर आएगा फ्रॉम ट्रम्प. सो हाउ डू यू सी ब्रिक्स प्लेइंग आउट इन द फ्यूचर ऑफ BRI? देखें, वो जो चाइना का आई थिंक जो विजन थी वो यही थी कि दिस शुड फीड इनटू BRI. ब्रिक्स शुड बी अ नेचुरल पार्टनर ऑफ BRI. एंड दैट मेक सम सेंस. अगर आप देखें जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, फॉर इंस्टेंस ब्रिक्स में इंडिया भी है, बट चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट अंडर BRI हैज़ नॉट गॉन इनटू इंडिया. सो ब्रिक्स ओनली टू द एक्सटेंट दैट इट हेल्प्स BRI विल बी यूज्ड फॉर चाइना. और इंटीग्रेशन के लिए उन्होंने BRI की इंटीग्रेशन के लिए ब्रिक्स को किया. जी हाँ. और इसमें वो जो चाह रहे हैं कि जी द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर शुड बी चैलेंज्ड, वो जो चैलेंज आएगा वो आएगा एज एन ऑल्टरनेट टू द US डॉलर.
ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, दे आर गोइंग टू गेट टुगेदर इफ़ दे आर एबल टू, एंड इट इज़ ऑन देयर एजेंडा कि यूएस डॉलर को जो है वो उसको अल्टरनेट क्रिएट करना। वैसे गोइंग ऑन अ टेंजेंट, बट सर ये जो डी-डॉलराइजेशन, इज इट टू अर्ली? मतलब अभी भी आई बिलीव 58% जो है, 58% द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ग्लोबल, वो अभी भी यूएस डॉलर में है। 80% बिजनेस ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर में है। फॉरेक्स रिजर्व, वो जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड होते हैं ये, वो भी यूएस डॉलर में है। तो इट टेक डेकेड्स। लेकिन आप ये देखें ना, वो जो Chinese saying a journey of 1,000 miles begins with the first step. So Chinese believe that. So they have started off on that journey, and the rest of the world also, they'll find ways out. देखें ना, अब ये जो cryptocurrency है, ये वो, when they become they become more relevant, तो फिर ये उसकी वजह से भी डॉलर पे तो इम्पैक्ट आएगा। सर ये सीपेक के ऊपर अगर दोबारा जीरो इन टुवर्ड्स द एंड, तो अगर हम सीपेक के फ्यूचर के ऊपर करें जीरो इन आफ्टर ऑल दीज डेवलपमेंट्स, सो वेरी क्विकली, मतलब क्या असेसमेंट क्या है? देखिए, आई एम वेरी डाउटफुल दैट सीपेक कैन ऐड वैल्यू टू BRI's कनेक्टिविटी। देखें, ये जो BRI है ना, इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिविटी एंड ट्रेड। बिल्कुल ठीक है। तो सीपेक को कौन सा प्रोजेक्ट है? हमारे दो थे what are called strategic projects, namely ML1 and Gwadar. Yes. So they are both in cold storage. उससे तो डेवलपमेंट तो सीमेक में है अभी। वो सीमेक में आप ज़्यादा डेवलपमेंट देख रहे हैं। So one indicator of why China has maybe I'd like to say that they have not written off CPEC, but they don't see any development going forward. मैं देख रहा था, प्रेसिडेंट शी हैज़ विजिटेड 23 कंट्रीज फ्रॉम 2020 to 2025। ठीक है जी। उसमें there are 3 visits to Russia. वो यू कैन से कि जी वो मे बी फॉर BRI, मे बी नॉट फॉर BRI। 1 visit to America, 1 visit to France। अगर आप ये 5 विजिट्स निकाल दें, पीछे रह गई 18 कंट्रीज। All those 18 countries are BRI member countries. So all those visits were regarding BRI, and she has not been here in Pakistan. So that should raise a red flag for our policy makers. Right. But sir, जिस तरह towards the end एक positive development जो हमने अभी देखी recently, पाक इंडिया जो war हुई थी, तो the role of China cannot be denied in that. They have proven, उस लिहाज से आपका क्या मतलब, अगर BRI नहीं, लेकिन अदरवाइज कमिटमेंट के लिहाज से तो they've stood up, मतलब they have, but we may not have been able to show our competence in executing CPEC, but we have done, I think, great service to China and to PLA and so on, by proving that their weapon systems, J-10C and PL-15, we have proved it effective tested it in combat situations. Real combat. So this should bring the two countries together. Right. And we are, after all, जो China की policy of strategic policy of encircling India, we are the western flank of India, and Myanmar is the eastern flank. Right. So हमें इस चीज़ को exploit करना चाहिए, और अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो वो जो चीज़ें जो CPEC, वो जो प्रोजेक्ट्स हैं which are not going to contribute to BRI in the short run, like ML1, वो एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, उसको हम fully execute करें. Then there are smaller projects like desalination plants in Gwadar, but on a very small level, वो बंद पड़े हैं, उनको आप करें. वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर द पॉपुलेशन ऑफ गवादर. सो ये जो चीज़ें हैं, इनको हमें विद चाइनाज़ हेल्प वी शुड also give the world the impression that CPEC is active. It may have slowed down, and at some point, hopefully, a different system will maybe take CPEC forward. देखें ये जो, if you look at CPEC 2013 to now, ये कहना कि जी ये political party responsible है या दूसरी political party responsible है for not taking it forward, I think that is not correct. So जो political parties हैं वो
they are basically the same people, the same families going back and forth, changing parties. So उनसे आप ये उम्मीद ना रखें कि वो ये CPEC को they'll have the capability of executing CPEC. अब वो कौन सा सिस्टम होगा जो आएगा और इसको they'll take it, you know, full speed ahead. We just have to wait for it. But in the meanwhile, it's ML1 and that is very critical for us. इसको हमें pursue करना चाहिए. It's a mega project, involves a huge amount of money. And also you can't be spreading yourself too thin. कि आप इसको ही कर रहे हो pursue और चीज़ों को भी CPEC के कर रहे हो. और CPEC के कोई बहुत छोटे छोटे projects भी हैं. Like the desalination plants in Gwadar जो 5 हैं बंद पड़े हुए. Very good for the local population. उनको activate करें. So keep CPEC alive. I mean that is very important. This is the bottom line. Keep CPEC alive. Even while we are making no contribution to BRI. अच्छा, अब Osama, to sum this all up, why I think CPEC is not a corridor for BRI. देखिए जो term है ना CPEC, इसमें जो key word है that is corridor. And remember we talked about all those corridors that feed into the BRI and add value to it. Now, because substantial Chinese imports and exports are not routed through CPEC, we can't really call this a corridor in that sense. Having said that, some of CPEC projects, like the rationalized ML1, which would not make sense for BRI, but are critical for Pakistan's economic growth, should really be pursued at full speed. But still for us, for our own economy. Right, sir. Right. So thank you so much. I think अब ये जो conclude हुई है series, now it will make more sense to the audience as well कि वो पूरे 5 के 5 इसके episode देखें. And if they have any questions as always, so please let us know in the comments. And अगली series हम इंशाल्लाह geopolitics और choke points के ऊपर start करेंगे. And thank you for your time. Thank you.